What is UK's Rwanda bill? And can government redistribute privately owned property? Also, what is Article 244A, implementation of which is being promised in Assam tribal areas? Hello everyone, I am Manas Srivastav and I'm here with the 3 must-reads from the Indian Express today. आज की तारीख है अप्रैल 25th ऑफ अप्रैल और हमेशा की तरह अखबार जो है वो आपके लिए एक टेक्स्ट बुक है करंट अफेयर्स की, जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की हर स्टेज में इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल. एंड यू नो व्हाट इज ऑल्सो यूजफुल इज द यूपीएससी की ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस, जो कि आपको बताता है which helps you and guides you to read in the newspaper what is relevant for your examination, how to read it, how to go beyond the headlines to know a little more for your examination. Now, let's come to the first must read from the Indian Express today. आज का जो पहला महत्वपूर्ण इशू है, मुद्दा है, आर्टिकल है, that is actually related to United Kingdom, UK, and I'm talking about the Rwanda bill. Now, this can be a very potential question in your prelims examination, and whenever there is a question related to refugees, asylum seekers, this kind of an example or this kind of a topic becomes a very important potential question. हमने पहले इसे कवर नहीं किया है, तो आज मैं एडिटोरियल के थ्रू इस पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं. एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल इज इंपॉर्टेंट. सो द एडिटोरियल पेज, ओके, एंड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, अ सॉल्यूशन दैट इजंट, is written by Sanjay Srivastav. And as you will read this article, you would know what is the Rwanda bill. So the first paragraph is one of the most important paragraph because it introduces you the bill. So the government of the United Kingdom has passed its Rwanda bill. It will now become a law. Under the bill, asylum seekers deemed to have illegally entered its territories after January 1, 2022 can be sent to the African country for processing. Crucially, irrespective of whether an asylum seeker is found to be genuine or not, they cannot return to the UK and must opt for settlement in either Rwanda or another country. Prime Minister of UK government devised the legislation after furious opposition to what was earlier a scheme to send illegals to Rwanda. In 2023, the Supreme Court declared the scheme unlawful, pointing out that Rwanda was not a safe country and the plan went against the European Convention of Human Rights, that is ECHR. Now see, when you read this particular paragraph, it is very lucidly written. बहुत clearly लिखा है कि रवांडा बिल क्या है. अब आपको करना क्या है, पहले एटलस में आपको रवांडा ढूंढना है, ओके, एंड जस्ट लुक एट द डिस्टेंस एंड एवरीथिंग, लुक एट द वाटर बॉडीज आल्सो इन बिटवीन, बिकॉज जब आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे इसमें इंग्लिश चैनल का भी यूज़ है, तो रवांडा इंग्लिश चैनल, और इसके साथ साथ I would also suggest to know about the Refugee Convention. Refugee Convention जो कि UNHCR, United Nations Human Rights Commission का, it's a very important convention, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. So all these things become very important. इसके अलावा आपको ये भी सोचना चाहिए while reading this editorial that क्या ऐसा कहीं और भी हुआ है. तो ये particular editorial इसका एक आंसर देता है, and it says that, and if you look at this paragraph, that in Australia's offshore refugee program involved the tiny South Pacific nation of Nauru, okay, whose population is around 13,000 with a GDP of approximately US dollar 135 million. It is estimated that in 2021-22, around 2/3 of Nauru's revenues came from payments connected to the Australian refugee scheme. Okay, so इन countries को इस तरीके से revenue भी मिल रहा है, and because of the countries who are sending its refugees or asylum seekers. Okay,
Then another important thing here in this particular article जब आप पढ़ेंगे is how it talks about the West's complicated attitudes towards migrants. Now यहाँ पे जो की है थोड़ी deep बात की गई है, and when you read it you would see that how it is, whose attitude toward of the Western nations towards the migrants are a little complicated, and how these other countries, say African countries or the global South countries, how they are being used in a way for these centers or these where these refugees or migrants or asylum seekers are being sent. Okay, so ये तो पर्सपेक्टिव हो जाता है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल का पढ़ने का और समझने का. बट एक साथ एक छोटा सा एडिटोरियल विच इज द एक्सप्रेस व्यू इज बीइंग मेंशन्ड, एंड द हेडलाइन इज क्रूएलिटी एज पॉलिसी. इसमें जो है कई बार जैसे कि यूपीएससी एंड अदर रिलेटेड एग्जामिनेशन में आपका ओपिनियन मांग लिया जाता है. यू आर आस्क्ड योर ओपिनियन. सो another exam will ask you that what is a Rwanda bill, what are its provisions or something like that. In UPSC the question can be a little bit forward. What do you think, what is your opinion about it, or what are the problems with the bills? And so look at the last paragraph and you would get your answer. Setting aside the legal and moral issues, the Rwanda bill is a bad policy. Of course, this is an express view. You can, in your examination, the course of your readings can form your opinion, but this is one thing which you can keep in mind. A relatively small number of undocumented migrants coming into the UK will fall under the law's ambit. Those willing to risk their lives to escape their homes, and those that exploit them are unlikely to be deterred. At an initial cost of £1.8 million per asylum seeker, scaling the policy is not financially viable. Then there's the fact that many, if not most, of the prospective deportees will likely approach the British court for relief, burdening the system and the exchequer. What the UK, like so many other developed countries, need is a streamlined process for asylum and immigration. This is an important point. As a former Chancellor of the Exchequer and investment banker, Sunak likely knows it. He must realize that xenophobia is a poor basis for policy. So obviously it's written from a different angle, but you can take up some points in order to understand the critical angle of this kind of a bill. Okay, now it's happening as UK. That doesn't mean it cannot come in the Indian examinations. So because current affairs of international relations and all these things are important. Now let's come to the second must read. Now when you come to the second must read, जब आप दूसरे important read पे आते हैं, मैं आपको explained page पे ले चलता हूँ. बहुत सारी बातें हो रही हैं अराउंड इनहेरिटेंस टैक्स. ओके, और यहाँ पे एक तो इनहेरिटेंस टैक्स और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की. तो एक तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर एक जो अजय सिन्हा कर्पूरम का आर्टिकल है, that can government redistribute privately owned property. ठीक है, this is a case actually before Supreme Court. और इसके केस में हम बहुत डीपली नहीं जाएंगे. Once it is finalized, we can talk about that now then. But actually ये प्राइवेटली ओन प्रॉपर्टी और क्या गवर्नमेंट इसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और आर्टिकल से जुड़ा हुआ है. देयरफॉर वी मस्ट गो इन दैट डिटेल. उस डिटेल में जाना जरूरी है. ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अभी क्या नहीं पढ़ना जरूरी है, बट क्या पढ़ना जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट. Now look at the first paragraph. It will set the tone. It says, as wealth distribution dominates new headlines in India, the Supreme Court on Wednesday began hearing an unrelated case about whether the government can acquire and redistribute privately owned properties if they are deemed as, and in quotes, material resources for the community as mentioned in Article 39B of the Constitution. So Article 39B क्या है, उसके बारे में पहले आपको जानना चाहिए. तो ये जो paragraph which is going below it tells about Article 39B. तो what is an important minority opinion, इसके basis पे दिया है. कुछ important cases हैं जो आपको पता होना चाहिए. Look at Article 39B which is mentioned that falling under Part 4 of the
Constitution, titled as Directive Principle of State Policy, Article 39B places an obligation on the state to create policy towards securing the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. तो इसका मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है कि जो मटेरियल रिसोर्सेज है उसकी ओनरशिप एंड कंट्रोल इसको रीडिस्ट्रीब्यूट, इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ताकि वो कॉमन गुड यानी आम आदमी के लिए और आम जनता के लिए इट कुड बी अ कॉमन गुड. ओके, सो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज an important article and very much related here. And यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है यानी डीपीएसपी है, और आपको पता है कि डीपीएसपी जो है इट इज एज इट इज मेंशन आर मेंट टू बी गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द एनेक्टमेंट ऑफ लॉ बट आर नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, तो आर्टिकल 39B का आपको पता है, पिछली कल भी हमने ऐसे डीपीएसपी की बात की थी. नाउ देयर इज एन इम्पॉर्टेंट केस. अब इस केस का जो जजमेंट है वो तो कुछ और था, बट इसका माइनॉरिटी जजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो सिंस 1977 द एपेक्स कोर्ट हैज वेड in on the interpretation of Article 39B on multiple occasions, most notably in, and the case name is important, State of Karnataka versus Sri Ranganatha Reddy of 1977. Now, इस केस में हुआ क्या था, डिसीजन क्या था? The case saw a 7-judge bench by a 4-3 majority holding that privately owned resources did not fall within the ambit of material resources of the community. तो ये मतलब ये कह रहा है कि प्राइवेट ओन जो आपके रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट मतलब आपके मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कम्युनिटी उसके एम्बिट में नहीं लाई करता है. हाउएवर इट वाज जस्टिस कृष्णा अय्यर्स माइनॉरिटी ओपिनियन विच वुड बिकम इन्फ्लुएंशियल इन ईयर्स टू कम. तो इसमें जो माइनॉरिटी ओपिनियन है कृष्णा जस्टिस का वो इंपॉर्टेंट है. व्हाट डिड ही से? ही सेड जस्टिस अय्यर हैड हेल्ड दैट प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज मस्ट आल्सो बी कंसिडर्ड मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी. Everything of the value, and this is a quote, everything of the value or use in material world is material resources, and the individual being a member of the community, his resources are part of the community. To exclude ownership of the private resources from the coils of Article 39B is to, hide or make hidden its very purpose of redistribution of the socialist way. ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अ माइनॉरिटी डिसीजन, बट दिस हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूज, दिस माइनॉरिटी डिसीजन. आपको कुछ और केसेस के नाम यहाँ पता चलेंगे, जैसे कि संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कोकिंग कोल 1983, देन देयर इज मफतलाल इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996. ये जो केसेस हैं यहाँ पे भी इसका रेफरेंस आता है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, बट आपको समझना है ये पर्टिकुलर आर्टिकल और इसका यूज. ऑलराइट, नाउ द लास्ट आर्टिकल और द लास्ट टॉपिक which I'm going to take up here today is another topic which is also related to elections because of the election promises, and it's related to Assam tribal area, and I'm talking about Article 244A, and it's written by Sukrita Barua, and it says the constitutional promise of autonomy for Assam tribal areas. इसमें बेसिकली ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि असम में ट्राइबल मेजॉरिटी दीफू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी विच वोट्स ऑन April 26. Candidates of all parties have promised the implementation of Article 244A of the Constitution to create an autonomous state within a state. This in fact has been the प्राइमरी इलेक्शन प्रॉमिस इन डीफू फॉर डेकेड्स. तो अब यहाँ पे आपको जानना है असम का थोड़ा मैप देख लीजिएगा. बट लेट्स सी आर्टिकल 244A है क्या. आर्टिकल 244A वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स द 22nd अमेंडमेंट इन 1969, which enabled Parliament to pass an act to form within the state of Assam an autonomous state comprising, whether wholly or in part, or any of certain specified tribal areas including Karbi Anglong. So Karbi Anglong was also in news, usko bhi padh lijiyega. This autonomous state would have its own legislature or council of ministers or both. This provision goes a step further than the provisions under the 6th schedule which are already in place in these areas. So 6th schedule bhi janna zaruri hai.
The Autonomous Council under the 6th schedule have elected representatives for more decentralized governors of the tribal areas, but they have limited legislative power, do not have control over law or law and order, and have only limited financial powers. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पॉलिटी की बुक पे जाएं, ये सारे 6 शेड्यूल देखें, ये आर्टिकल देखें, ये समझें कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है. नाउ These are my 3 must reads from the Indian Express. Of course, न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको और भी चीज़ें बताने वाले हैं. तो please pay attention. Write to me at manas.shrivastava@indianexpress.com. And that's all from me. And as I always say, think smart, work hard, conquer your goal. Bye-bye.